Hello viewers, welcome to the Knowledge Mantra. This is your speech coach Nitesh Jha. And today in this video, I'm going to teach you 10 vocabs. So let's start without wasting the time. See the first word. The first word is spick and span. How do you pronounce it? Spick and span. जी हाँ बिल्कुल pronounce सही से करिएगा दोस्तों. Spick and span. How do you pronounce it? Spick and span. That means completely neat and clean. जी हाँ दोस्तों, कोई चीज बहुत neat हो और clean हो. That is spick and span. That's completely neat and clean, tidy, right? So आप कह सकते हो my handwriting is quite spick and span. My handwriting is spick and span, right? If you go to the bachelor's home, you would not find the room spick and span. जी bachelor's का room जो है आपको spick and span नहीं दिखेगा, मतलब neat and clean नहीं दिखेगा. मैं कह सकता हूँ that my room is spick and span. मेरा जो room है, घर है, वो काफी neat और clean है, right? Spick and span. How do you pronounce it? Spick and span. मतलब बहुत साफ सुथरा. Right, let's move for next. Next word is daylight robbery. Daylight robbery is a price when you are like overcharging, okay? A price which is very high, right? I can say overcharging, right? What can I say? Overcharging. Let's suppose you went to a shop and to buy a marker. Right, you went to a stationery shop to buy a marker and the price of this marker is, let's say, 50 rupees and you are charged 100 rupees for the same. So that's a daylight robbery. कहते हैं ना लूटा जा रहा है, लूट मच रही है. So that's a daylight robbery. You are overcharging. Okay, this is what you say to the shopkeeper. आप shopkeeper से यही कहेंगे, आप ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा charge कर रहे हैं. So it means it's a daylight robbery. You are overcharging, right? That's a overcharging. मतलब 50 रुपए का सामान कोई आपको 100 रुपए में दे तो he is overcharging, right? That is a daylight robbery. Okay, next is surefire. How do you pronounce it? Surefire. Surefire का मतलब होता है दोस्तों, surefire का मतलब successful. जी, successful, right? कोई चीज तय हो, मतलब सफल होना ही है. Certain to be successful आप कह सकते हैं. Certain to be successful or certain to success, right? Something which is certain to, certain. I can say certain to successful. मतलब certain to be successful मतलब जो निश्चित हो, निश्चित जिसमें सफलता मिले. Example के तौर पर मैं कह सकता हूँ what is a surefire way to be rich? क्या तरीका है, सफल तरीका क्या है अमीर बनने का? आप मेरे वीडियोस देखते हैं. इट इज द श्योरफायर वे टू लर्न इंग्लिश. जी, अंग्रेजी को इंप्रूव करने के लिए, अंग्रेजी को सीखने के लिए ये एक सफल तरीका है, राइट? सो वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस इज अ श्योरफायर वे टू इंप्रूव इंग्लिश. जी, आगे बढ़ते हैं. अगला है डे इन डे आउट. आप यहां पर एक कॉमा इस्तेमाल कर लेंगे. दैट इज डे इन डे आउट और यू कैन से डे इन एंड डे आउट. अगर आपको ये कॉमा यूज नहीं करना है तो आप एंड लगा सकते हैं. डे इन एंड डे आउट. सो डे इन एंड डे आउट और डे इन डे आउट, राइट? डे इन डे आउट मीन्स ऑलवेज, राइट? दैट इज ऑलवेज, every time, okay? Always or every time. For example, I used to take liquor day in and day out. I can say all the time. हमेशा बिल्कुल all the time, right? तो जिन व्यक्ति ने IAS क्रैक कर लिया है, IAS एग्जाम, मैं कह सकता हूँ they used to study day in day out, right? If you also want to crack the competitive exams, you need to study day in day out or you need to study day in and day out. Means always you have to study, all the time you have to study, right? Let's see the next word. Next is off and on. What do you call it? Off and on means not always or not regularly, right? Not regularly or you can say hardly or occasionally maybe, right? Off and on. For example, since I'm very busy, so I'm hard pressed for time, so I occasionally talk to my parents over the phone. So I can say I call my parents off and on, right? Or I can say I go out
off and on, right? So off and on means not regularly or occasionally. What can I say? Occasionally. That's correct. Occasionally. Right? That's occasionally. What do I call it? Occasionally. Right? That is off and on. Well, friends, see the next word. The next word is short change. How do you pronounce it? Short change. Short change means to give someone, that's right, to give someone less or lesser than they deserve. Right? To give someone less than they deserve. Right? You can say that to give someone less than they deserve. मतलब किसी को कुछ देना जिससे जितना वो डिजर्व करता है उससे कम. राइट? दैट्स कॉल्ड शॉर्ट चेंज. अब जो बच्चे टी स्टॉल्स पर काम कर रहे होते हैं, दे आर शॉर्ट चेंज्ड. Why? Because they are not given the salary as per their capability. Right? मतलब उनको short change किया जाता है, उनको cheat किया जाता है by giving them less than they deserve. जी दोस्तों, that's called short change. या एक और example दे सकते हैं. मैं कह सकता हूँ I was short changed in the cafe because I had like 100 rupees and after the coffee I was left with only 5 rupees. जबकि मेरे पास 10 रुपीज होने चाहिए थे, तो मतलब मुझसे ज्यादा पैसे ले लिए गए. आई वॉज शॉर्ट चेंज्ड. राइट? जैसे मान लीजिए मैं कॉफी पीने गया एंड आई हैड 100 रुपीज. ओके, 19 का कॉफी मैंने पिया एंड आई शुड हैव 10 रुपीज विद मी, लेकिन मेरे पास 5 रुपए बचे थे. मतलब 5 रुपए मुझसे ज्यादा ले लिए गए. यू कैन से दैट आई वॉज शॉर्ट चेंज्ड. क्या कहूंगा दोस्तों? आई वॉज शॉर्ट चेंज्ड इन द cafe. That's called short change. Right? See the next. अगला word है standoffish. How do you pronounce it? Standoffish. Standoffish का मतलब होता है unfriendly. जी, pronunciation भी जरूरी है दोस्तों. जी, pronounce करते रहिएगा. The word is standoffish. How do you pronounce it? Standoffish. Standoffish का मतलब होता है unfriendly. For example, he talked to me in standoffish manner. Means unfriendly manner. Okay? He behaved in standoffish manner. Teachers should not behave in a standoffish manner with their students, right? They should behave amicably or maybe friendly, right? उनको standoffish तरीके से जो है डील नहीं करना चाहिए. Standoffish मतलब unfriendly, right? Next is heart to heart. How do you pronounce it? Heart to heart. Heart to heart का मतलब होता है दोस्तों candid. बहुत ही ज्यादा candid या फिर frank. बहुत ही कैंडिड कम्युनिकेशन या कैंडिड टॉक्स. राइट? आई वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड इट वाज अ कैंडिड टॉक्स बिटवीन आई एंड इंटरव्यूअर. राइट? बिटवीन इंटरव्यूअर एंड आई कैन से. सो दैट इज हार्ट टू हार्ट. दैट वाज कैंडिड. सो इट वाज अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन और इट वाज अ हार्ट टू हार्ट टॉक्स took place. Right? So that's a heart to heart. Means very candid, very frank. Okay? Next word is malpractice. What do you say? Malpractice. That's called wrongdoing. G. Wrongdoing. Right? Or I can say that wrongful act. Or I can say a wrongful act. For example, I say they are accused of medical malpractice. They are accused of medical malpractice. There are malpractices that takes place in the election से पहले और you can say during the election काफी malpractice होती है. मतलब काफी wrongdoing होती है. right? election के दौरान. The next last but not the least, the word is euphoria. How do you pronounce it? euphoria. दोस्तों euphoria नाम की एक बैंड भी है. डॉक्टर पलास जो है वो लीड करते हैं इस बैंड को. उनका बैंड है ये यूफोरिया के नाम से. यूफोरिया का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस. व्हाट इज दैट? एक्सट्रीम हैप्पीनेस. दैट्स करेक्ट. दैट्स कॉल्ड एक्सट्रीम हैप्पीनेस. एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं दैट दे आर इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया. दे आर इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया आफ्टर विनिंग द लॉटरी टिकट्स. मतलब लॉटरी टिकट्स विन करने के बाद वो किस स्टेट में थे? एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्सट्रीम जॉय के स्टेट में थे. दैट्स कॉल्ड यूफोरिया. दैट इज एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्सट्रीम जॉय. राइट? और यू कैन से जॉय. राइट? अ फीलिंग ऑफ जॉय. राइट? सो आई कैन से ही इज
in a state of euphoria after passing the marks, or I can say passing the exam with good marks, right? So I can say he is in a state of euphoria after passing the exam with good marks, right? So these are the words. I'm sure you understood. Like, share और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा इनिशिएटिव कैसा लग रहा है. देखते रहिए द नॉलेज मंत्रा.